Hello students, this is a question from IIT-JEE Advanced 2025 exam. I think this question is somewhat controversial. Okay, see the question says there is a conducting sphere and it has charge q. It is being rotated about its axis through center. So we have to calculate ratio of magnetic moment and angular momentum, and the value is given to be this much. So we have to find the value of alpha. Okay. So if you assume that charge on the conductor is not affected by rotation, okay, then charge is on the surface and mass is distributed all over the volume. So if you do the calculation, answer comes out to be 5 by 3. Okay. But answer comes out to be 5 by 3 if you assume that because of the rotation, charge is not getting redistributed. Okay. So rotation does not affect the charge distribution of the conductor. If we assume this, then only answer will come out to be 5 by 3. All right. But here, fact is that suppose see, this is a situation of neutral sphere. Okay, suppose there is a neutral sphere and it doesn't have any charge. Okay, so this was initially of this type. Okay, so when omega is zero, there is no angular velocity. This sphere is neutral. ठीक है ना, ये neutral sphere है. Now, if you rotate this sphere about its axis, it is conducting. We are assuming it to be conducting. Okay. So if you rotate it about its axis, then what happens if you analyze the situation from the reference frame of the conductor itself, then electrons will experience a centrifugal force and away from the axis of rotation. So they will move from away from the axis of rotation. So electron will accumulate here. Okay, so there will be now deficiency of electrons inside the conductor. Okay, so that we represent as positive charge. So therefore there will be some positive charges inside the conductor. Okay, और ये अपर पार्ट में भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाता है. तो अगर आप किसी न्यूट्रल स्फीयर को रोटेट करते हो ना, कंडक्टिंग स्फीयर को अबाउट इट्स डायमीटर, सो दिस विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूट्रल स्फीयर. ओके, तो चार्ज देखिए अंदर भी आ रहा है, ठीक है ना, चार्ज सरफेस पे भी है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज कम्प्लीटली नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, and it is developing because of rotation of a neutral sphere. Now if you put some charge q on it, okay, तो जैसे इस स्टार्टिंग में अगर इसमें कुछ चार्ज होगा और उसको आप रोटेट करोगे तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सुपरपोजिशन ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and this charge distribution. So overall charge distribution will be actually non-uniform. Surface पे जो charge आएगा वो non-uniform हो जाएगा, ठीक है ना. And there will also be some charge in the volume. Okay, volume में भी कुछ charge होगा. So now this object is rotating, there is charge in the volume, there is non-uniform charge distribution on surface. Okay, so definitely अगर ऐसा situation है, ठीक है, तो आप चार्ज ऑन द स्फीयर को तो यूनिफॉर्म एज्यूम नहीं कर सकते हो, एंड यू कैन नॉट जस्ट कैलकुलेट बाय मैग्नेटिक मोमेंट बाय टेकिंग चार्ज ऑन द सरफेस टू बी यूनिफॉर्म. ओके, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ठीक है. जो आंसर 5/3 आ रहा है वो डेफिनेटली एग्जैक्ट आंसर नहीं है. ना क्वेश्चन अराइजेस कि ये रोटेशन के इफेक्ट से ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो रहा है इसका मतलब बेसिकली डेंसिटी कितना प्रोमिनेंट है, मतलब इन कंपैरिजन टू द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये अप्रिशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना. तो दैट इज वन वन थिंग दैट कैन बी डिस्कस्ड एक्चुअली. इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन से, दिस इज क्वाइट फीबल. ओके, इट इज नॉट टू मच. ओके, तो कंपेयर टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये स्मॉल इफेक्ट है, बट इट इज देयर. ओके, सिंस एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट मेंशन, कंडक्टिविटी इसका मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना. तो इसीलिए हम लोग किसी मतलब लॉजिक से इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट जस्ट से दैट देयर इज नो चार्ज redistribution because of rotation. Okay, so therefore we can say if somebody claims that charge will get redistributed, charge on the sphere will become non-uniform, so answer should not be 5/3, then that claim should also be considered. Okay, so definitely इसका आंसर अगर accuracy level पे बात करें तो 5/3 इसका आंसर नहीं होगा. Okay, approximation level पे बात करें तो that's a correct answer. 5/3 is approximately correct answer but not exactly correct answer. Okay.